Because we have already done all kinds of transformations. What are the 4 transformations that we did? एक एक करके लिखते हैं ना. Let's write down each one of them individually. Translation, enlargement, rotation, and reflection. So yeah, okay, now we'll be doing all these transformations using matrices. Translation we have already done using matrices. Translation हमने किया ही matrix के साथ था. How did we do translation when we were using matrices? We said, okay, object plus translation is equal to image. Is that right or wrong? इसके एक example मैं दूंगा. If I have a graph over here and if I have a point 3, 1 and if I want to translate this point, मैं इसको उठा के कहीं भी लेकर जाता हूँ and I want to bring it to 7, 3. So what have I done? मैंने translate कर लिया. There is a movement in x and there is a certain movement in y. जो object के coordinates हैं वो भी हम आराम से note down करते हैं. तो coordinates of the object, for example, इसी example को लेते हैं 3, 1. We write them as a matrix 3 and 1 plus कोई भी translation मुझे बताओ example any translation 5 and -2 ले लेते हैं. What does this mean? 5 and -2 का मतलब क्या है? 5 is movement in x and -2 is movement in. So what is the image then? Eventually image क्या होगा मेरा? Can anyone tell me? 8 and -. सही है? So this is our translation. Example, just an example. 5 and -2 is just an example. तो हमने generalize इसमें कर लिया. This is for translation. We have already done translation में तो किया ही matrix था. Object के coordinates, image, the coordinates of the image, and this is the translation matrix. इसके बाद जो matrix करेंगे वो all of them will be different from this one. तो इसलिए पहले इसको अलग से करके side में कर देते हैं, and then we'll move on to the actual matrix transformation that we are supposed to cover. सब में एक पहले general बात हम कर लेते हैं before proceeding. हम कहेंगे सब में we'll have a transformation matrix. We'll multiply it by the object to get the image. कुछ generalized चीजें जरा समझते जाएं. Transformation matrix multiplied by the object and we will get the image. How will we represent an object? जैसे translation में किया था. How will we represent an object? Matrix में अगर करना है तो बोलो जोर से बोलो. Column vector or column matrix. सही है ना? Column matrix के तरह we will represent the object. And what about the image? वो भी हमारे पास that will also be a column matrix. The transformation matrix जितने भी सारे पढ़ेंगे they will be 2 by 2 matrix. What does a 2 by 2 matrix mean? 2 rows and 2 columns. That is a 2 by 2 matrix. So generally अगर मैं लिख रहा हूँ, so this is how I'll write it. ये 2 by 2 matrix हो गया. Multiplied by, अब object का भी कोई column matrix होगा, just writing it down generally. And image का भी कोई matrix होगा. यहाँ तक बात clear है नहीं है? This is generalized for all future matrix transformation that we do. अभी हमारा primary objective है to figure out this using examples of objects and images. And once we have figured out the transformation matrix, then we will use those matrices to get our images. बात समझ आ रही है नहीं आ रही? Right now for just one time drill, we will try to figure out these transformation matrices on our own. एक दफा figure out कर लेंगे for some specific transformations. उसके बाद we will use them to get the images of objects. Is this clear to everyone? So what is the primary objective? अभी हम क्या काम कर रहे हैं? I'll give you objects. We will transform them and get the images. We will observe their images, and using the object and the image, we will try to figure out the transformation matrix. Is this clear?
अच्छा, एक चीज में जरा पहले लेट्स अंडरस्टैंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आती है नहीं आती ये बात बताइए पहले। सो इफ आई टॉक अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दोबारा रिव्यू करा रहा हूँ फॉर स्टूडेंट्स हु आर अनअवेयर ऑफ हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्सेस A, B, C and D. If these are four elements of a matrix and it is supposed to multiply by 2 and 3, it is supposed to multiply by this matrix. How do we multiply? कैसे multiply करते हैं matrix को? बहुत आसान तरीका मैंने बताया था. Do this. थोड़ा यो करो जरा, यो बन जाओ. शाबाश, very good. सही है. हाँ. Pick up the elements. First row pick करो. What is on your index finger? A, and what is on your pinky? P. Abhi to I am picking up the first row. I am picking up the first row. What is on your index finger? A. And what is on your pinky? B. Now rotate your hand. Multiply A किससे multiply होगा? 2. And B will multiply by one more thing as well. Up whatever your answer is, very good. You add them up and you write down your answer. So your answer is 2A plus 3B. We cannot add them. They are unlike terms. ये पूरा 2A plus 3B is one single term. Then what do? We pick up the second row. Second row, what is on our index finger? C. And what is on our pinky? D. We rotate it. We multiply 2C plus 3D. Very good. And this is one single term. Is this clear or not? Sorry. My bad. 2C plus 3D. Is this clear or not? This is general matrix multiplication for those of you who are unaware of how do we multiply matrices. Is this clear or not? बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अच्छा, पहली चीज बिफोर अगेन कुछ बेसिक्स मैं बता रहा हूं जो प्री रिक्विजिट्स हैं. एक बात नोट डाउन कर लो, दैट फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टू एग्जिस्ट, तुम लोग सिलेबस पे है, द ओरिजिन क्या होता है? 0, मस्ट बी एन इनवेरिएंट पॉइंट. ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब prerequisites before going on to the actual transformation matrix. What is an invariant point? I told you it's an English word. What does it mean? Invariant. Very good. The point that does not change. In case of enlargement, what is the invariant point? Center of enlargement. Very good. In case of rotation, what is the invariant point? Center of rotation. Well done. In case of reflection, we do not have an invariant point. We have an invariant line. Very good. We have an invariant line. And what is the invariant line? Line of reflection. If a point is on the invariant line, uska image bhi wahin pe aata hai, the image does not change. Is that right? If we have done all of this, अब हम उसको summarize कर रहे हैं, conclude कर रहे हैं, and we'll be using the matrix. So for a matrix to exist, for example, if we will be doing enlargement, before if I tell you कि enlargement का matrix बनाओ, what must be the center? If I want you to form a matrix for enlargement, what must be the center? 0, 0, which is the origin. If I want you to form a matrix for rotation, what must be the center? 0 and 0. उसके अलावा कोई और center होगा तो matrix नहीं बनेगा. Transformation तो we have done with different centers, different angles. Is that right? But if we want, if the question wants us to give a matrix for that, the center must be. Okay, if I want you to make a matrix for reflection, the line of reflection must pass through the origin. वरना matrix नहीं बने. Be very clear about it. So for a matrix to exist, this origin 0, 0 must be an invariant point. Is this clear or not? सबके लिए आगे जितने भी future हम करेंगे सबके लिए. So सबसे पहले let's take an example. Let's move on to enlargement. Enlargement के क्या दो पैरामीटर्स होते हैं कि मुझे बताएगा? Very good. Center of enlargement and scale factor. So I'll provide you with two. Center क्या होगा? Without even if I'm talking about matrix. Very good. क्यों हर दफा तो नहीं होता 0, 0? अभी क्यों होगा? Very good. क्योंकि we are going to study its matrix, तो center 0, 0 होगा. Not for all enlargements, but if we want to form a matrix for this one, the center must be 0, 0.
नेक्स्ट हम करेंगे स्केल फैक्टर. लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट. आई हैव दिस पॉइंट 3 1. सही है. If I listen to me carefully, if I want to enlarge it with a scale factor 2 and center 0 0, हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? हम पहले एक लाइन बनाते हैं और सेंटर से लेकर पॉइंट तक की, एंड वी एक्सटेंड दैट लाइन. इज दैट राइट और रॉन्ग? फिर हम क्या कहते हैं कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट था इमेज उससे इमेज डबल दूर होगा अगर इफ द स्केल फैक्टर इज 2. ये सारे डिस्टेंसेस कहां से देखे जाते हैं? सेंटर से. कहां से देखे जाते हैं? इन दिस केस व्हाट इज द सेंटर? नॉट इन ऑल क्वेश्चंस. इन दिस केस व्हाट इज द सेंटर? ओरिजिन या 0 0. सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट? कितनी दूर है? 3 in x and 1 in y. तो इमेज उसका डबल करो. 6 in x and 2 in y फ्रॉम सेंटर. इमेज हमारे पास क्या होगा? 6 and 2. 6 and 2. This will be the image. If the scale factor was 3, very good. 9 and E. अब और से देखना. I'll be using one example. Remember, मैंने what did I say? हम खुद मैट्रिक्स एक दफा बनाएंगे and then we'll be using them. Okay, class. Example ले रहा हूं. If 3 was the object and 3 1 was the object, if the scale factor was 2, what was your image? 6 2. I repeat, if the scale factor was 2, the image was, if the scale factor was 3, the image was 9 and, is that right? Let's use an example. 6 और 2 की example use करते हैं. I already know the object. I already know the image. I want to figure out the matrix. This is a one-time drill. एक दफा matrix figure out कर लेंगे, फिर ये काम बार बार नहीं करेंगे. सही है? So I want to figure out the matrix. कि एक matrix क्या होगा? Just tell me the first row. Again, यो करो जरा. I do not know the first row, but I do know the answer. मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं 3 और 1 से. वेरी गुड. मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाए? 6 और 2. 6 2 तो बाद में आएगा. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रो. 6 आ जाए. आई डू नॉट नो द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में ऐसे ही रखूं कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं 3 1 से तो मेरा आंसर क्या आ जाए? 6. सो व्हाट मस्ट बी द फर्स्ट रो? 2 एंड बोलो बोलो 0. अलीना सजेस्ट के 2 0 होना चाहिए. इफ आई मल्टीप्लाई तो मुझे आंसर 6 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? व्हाट अबाउट द सेकंड रो? बोलो. 0 एंड 2. आप मल्टीप्लाई करके देखें. व्हाट इफ द स्केल फैक्टर वाज 3? 3 0 0 3. व्हाट इफ द स्केल फैक्टर वाज हाफ? हाफ 0 0 half. What if the scale factor is k? That's it. 3k and 2k. 3k and k, sorry. 3k and k. That is just an example. बार बार कह रहा हूँ सब example है. To figure this out, this is what we are supposed to do. So enlargement with center 0 0 and scale factor k has a matrix k 0 0 k. If I give you any point now, मैं कहूँ point है 5 minus 5 और उसको enlarge करना है with a scale factor k, center 0 0. You'll just take this matrix, you'll multiply it by the object to get your image. Is this right? Graph नहीं, कुछ नहीं इसमें use करे. We're just using the matrix. Do not forget this. We are using the matrix, transformation matrix. We'll multiply it by the object and we'll get our image. Is this clear? Enlargement का clear है? Enlargement के बाद let's move on to rotation. Clear है? Enlargement का एक ही matrix है k 0 0 के. इसका center क्या है? 0, 0. And what is the scale factor? K. K can be any value, half, -2, -3, 5, 2, any value. Is this clear or not? If ऐसी review कराने पूछ रहा हूँ, if K has a negative value, तो क्या होता है? Negative scale factor में what do we observe?
इन एनलार्जमेंट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट गोज ऑन द अदर साइड, वो फ्लिप हो जाता है, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है और साइज भी चेंज होता है। इज दिस क्लियर? व्हाट इफ k इज हाफ? छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है, इट श्रिंक्स, बट वी कॉल इट एनलार्जमेंट। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेशन। रोटेशन हमारे पास, पहले लेट्स टॉक अबाउट 90 degrees clockwise. What will be the center? Why? जीरो तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, खाली जीरो में। जीरो जीरो या ओरिजिन? Why? क्योंकि हम उसका मैट्रिक्स पढ़ा। We are talking about a matrix. The origin will be the invariant point. सही है? तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। क्या रोटेशन ओरिजिन के अलावा कहीं और से नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स तो सेंटर से। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सेम पॉइंट 3 1 लेते हैं। ओके, इफ, एक एग्जांपल देता हूं। इफ the hand of the clock is at 3 and if I tell you इसको 90 डिग्री clockwise rotate करो, कहां चला जाएगा? 6 पे चला जाएगा। You are right. If it is at 3 and if I tell you 90 डिग्री clockwise rotate करो, कहां चला जाएगा? Now let's talk about the graph. If it is over here and if I tell you अगर यहां होता तो, and if I would have told you to rotate it 90 डिग्री clockwise, कहां जाता है? कहां? 3 पे इधर चला जाता, ऊपर। 0 -3, प्लीज पॉइंट्स को प्रॉपर बोला करो। इफ यू टॉकिंग अबाउट ग्राफ, डू नॉट से -3। -3 कौन सा वाला? हाउ डू आई नो? सो इफ इट वाज एट 0 3, वो कहां चला जाता? 0 -3 को। इज दिस अग्रीड और नॉट? इसमें असल में एक पॉइंट 0 आ जाता है तो हमारे लिए मैट्रिक्स फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। लेट्स चेंज द पॉइंट। अगर वो 3 1 पे है तो कहां जाना चाहिए उसको 90 डिग्री रोटेट होके क्लॉकवाइज? ओके, नवाइल सेज कि यहां आना चाहिए। यहां आएगा क्या? सोचो। वेरी गुड। तो सोचो ना, अगर 3 पे था, लिसन टू मी, क्लॉक को देखो। इफ इट वाज एट 3 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, कहां जाता? अगर 3 पे होता तो 3 और 6 बड़ा आसान है। 3 से ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कहां जाता? 5 जाता। वेरी गुड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सो इफ आई एम स्टार्टिंग 3 से थोड़ा ऊपर से, तो रोटेट होके इसका इमेज कहां आना चाहिए? एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 1 से अगर मैंने शुरू करा है तो इसका इमेज यहां पर आता है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी समझाता हूं। देखो, हाउ डू वी रोटेट? हम क्या कहते हैं, सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, 90 डिग्री रोटेट करो और उसका इमेज आ जाता है। इज दिस राइट? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है सेंटर से, इमेज इज इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। if I am giving a very easy example क्योंकि horizontal vertical समझ में आसान होता है। if you have the hand at 3 and if I tell you rotate it 90 degree clockwise, where does it go? 6। 3 से थोड़ा सा ऊपर कर दो, 2 पे ले जाओ। चलो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, कहाँ आएगा? 5 पे आएगा ना। तो यही बात कर रहा हूँ कि 3 पे होता तो -3 0 -3 पे चला जाता। बट इफ आई स्टार्टेड 3 से थोड़ा सा ऊपर, 3 1 से, तो वेयर शुड इट लैंड ऑन? 1 and -3। इज दिस क्लियर और नॉट? 1 and -3. So let's take this example and try to figure out the matrix. थ्री और 1 वाला पॉइंट कहां चला गया? टेक योर टाइम। 3 and 1 वाला पॉइंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर कहां चला गया? 1 and -3। एक दफा करने का काम है, 1 and -3। नाउ कैन यू टेल मी द मैट्रिक्स? You already know the object, you already know the image. Now figure out the first row. पहले सबसे पहले figure out the first row. Okay, 1 and let's see 1 and 0 मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करके देखो, यू नो द आंसर, यू नो व्हाट द आंसर शुड बी। क्या आना चाहिए आंसर? आंसर क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। लेट्स 1 और 0 को मल्टीप्लाई करके देखो। डू यू गेट 1? यू विल गेट 3। तो गलत है, ट्राई अगेन। 2 और 1 -2 पे नहीं जाते, 1 0 -1 यही नंबर्स यूज करेंगे, उसके अलावा विल नॉट बी यूजिंग एनी अदर। 0 एंड ओके, 0 and 1 लेट्स सी।
एक और सजेशन आई है 0 and 1 लेट्स मल्टीप्लाई, डू यू गेट 1? करके देखो, 0 मल्टीप्लाइज बाय 3, तो 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाइज बाय 1, फाइनल आंसर इज 1. तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. व्हाट अबाउट द सेकंड रो? यू ऑलरेडी नो द आंसर. आंसर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए. अब ऐसी रो सेट करनी है कि आंसर हमारे पास 1 0. ओके, लेट्स सी इफ इट इज 1 0, लेट्स मल्टीप्लाई, डू यू गेट -3? नहीं, तो ये गलत है. लेट्स ट्राई अगेन. -1 and 0, करो मल्टीप्लाई. तो दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर 90 degree clockwise rotation about the origin. जनरल बन गया फॉर ऑल 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन. फिर ये नहीं करेंगे, सब बिल्कुल स्पेसिफिक मैट्रिसेस फॉर वेरी स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशंस हम पढ़ रहे हैं. इज दिस क्लियर बच्चे? फॉर अदर पे हम ना वो मैट्रिक्स हमसे सवाल पूछेगा ना हमें रिस्पॉन्ड करना है. इफ यू वांट, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, तो ए लेवल्स की फर्दर मैथ्स में फिर ये टॉपिक और डिटेल में फॉर ऑल अदर एंगल्स, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, नॉट एट दिस लेवल, डोंट वरी. तो बहुत स्पेसिफिक और इजी बेसिक ही पूछता है. Is this clear? So अब आपको if I give you any point and if I tell you rotate it 90 degree clockwise, मुझे एक पॉइंट मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मुझे बताओ क्या होगा. 4 and -3, इसका इमेज क्या बनेगा? 4 -3 is the point. Rotate it 90 degree clockwise. 4 and -3 is the point. 4 and -3 is the point. 4 -3 is the object. 4 and -3 is the object. इसको रोटेट करना है 90 degree clockwise. Use the matrix. Now I'm telling you, use the matrix. इससे multiply करो. If I'm giving you the object, बच्चे, just multiply it by the matrix. 4 and -3. Can you tell me the image? -3 and -3 and that's it. That is the entire reason. ये ऑब्जेक्ट है और इसका क्या इमेज क्या है? व्हाट इज द इमेज? -3 and -3 -4. और से देखकर मुझे जरा बताना, डज इट इस ऑब्जेक्ट का क्या ये इमेज हो सकता है if I rotated 90 degree clockwise about the origin? बिल्कुल है, होगा. What if, अच्छा what if the hand is at 4? 90 degree clockwise rotate करो, कहाँ जाएगा अगर 4 पे होता तो? थिंक अबाउट द क्लॉक. हाँ, 4 पे होता तो 3. आराम से सोच के, 3 पे होता तो थोड़ा सा नीचे लाओ 3 से. if it was at 4, 7. और से देखो, if it was at 5, if it was at 6. मेक सेंस? वॉर से देखो, वही हुआ है कि 4 का हैंड था, 4 से कहाँ गया वो? 7 पे. यू कैन इमेजिन इट दैट वे, द हैंड वाज एट 4 और 4 से वो 90 डिग्री रोटेट होके 7 पे आ गया. इज दिस क्लियर और नॉट? समझ आ गई बात? तो दिस इज अ मैट्रिक्स दैट वी हैव that we will use for all 90 degree rotations clockwise about the origin. Okay, now let's try to do the second one, which is 90 degree anti-clockwise about the, can't we rotate objects from any other center? We can, but why are we not doing so right now? Because we want to form matrices. Be very clear about it. Do not oversimplify it. Sir, हमने तो यूं कर दिया, do not do that. Okay, let's take the object and image, एक example लेके we'll try to understand it. And I'm telling you, do not worry too much. This is just a one-time drill. Once we have the matrix, we'll just be using the matrices for our answers. Okay? Let's take the same object 3 and 1. Take your time. Do not hurry. Do not rush to give me the answer. 3 and 1.
rotate it 90 degree anti-clockwise about the origin and tell me the image. Take your time, think about it and then respond. सोच के आराम से. Good. You are thinking about the clock. Good. कि अगर 3 पे होता तो 12 होता. Good. Very good. कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्या होता अगर 0 पे होता तो? अगर 03 पे होता तो? कोऑर्डिनेट्स में 12 क्यों होगा बच्चे? क्लॉक में 12 होगा. नो. क्यों? थिंक अबाउट इट बच्चों. यहाँ पे देखो, इफ इट वाज एट 30, if it was at 3, बोलो 03 पे चला जाता ना. खुद ही पीपल आर टेलिंग मी क्लॉक में कहा जाता, 12 पे चला जाता ना. तो 12 कहाँ है? यही है ना भाई. इफ इट वाज एट दिस पॉइंट तो रोटेट होके यहाँ आ जाता ना बेटे. थिंक अबाउट द क्लॉक. 3 पे होता तो कहाँ जाता बताओ ना. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे चलती है? 12 पे चला जाता. इज दैट राइट? वन थिंग वी से कि जब रोटेट कर रहे होते हैं तो सेंटर से जितना दूर ऑब्जेक्ट इमेज भी. तो हम यही बात कर रहे हैं कि इफ इट वाज एट 30 and if I wanted to rotate it 90 degree anti-clockwise, so it would have become 03. Is that right or wrong? लेकिन 0 आने से थोड़ी कंफ्यूजन जाती है. लेट्स टेक अ डिफरेंट पॉइंट. अगर मैं 3 1 लेता तो कहाँ जाएगा 90 डिग्री रोटेट होकर? आराम से टेक योर टाइम. डू नॉट हरी, डू नॉट रश टू गिव मी द आंसर. 3 1 वाले पॉइंट को सेंटर से रोटेट करके सोच समझ के जवाब दो. वेरी गुड. दिस विल बी द इमेज. टेक योर टाइम. किसी एक को जवाब आ गया तो सबको हाँ हाँ करने की जरूरत नहीं है. टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन आस्क. गुड. वेरी गुड. और हु एल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड? गुड. वेरी गुड. शाबाश. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. वेल डन. लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल फर्स्ट. बार बार मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज इफ इट वाज ओवर हियर and if I tell you to rotate this 90 degree anti-clockwise about the origin. एक clock की example ले रहा हूँ मैं. If the hand was at 3 and if I tell you 90 degree anti-clockwise rotate करो about the origin, 12 पे जाएगा. और coordinates के हिसाब से where should it go? 03. Is that right? इस पे हमारा agreement है. Now if I do not take the point 3, मैं 3 से थोड़ा सा ऊपर वाला point लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ. Rotate it 90 degree anti-clockwise about the region. If the hand is at 2, सोच समझ के जवाब देना. सोच. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लॉक. क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं. इफ द हैंड इज एट 2 and if I want you to rotate it 90 degree anti-clockwise about the region, तो कहाँ चला जाएगा? 11 पे जाएगा ना. इज दैट राइट? अब यहाँ पे देख लो ग्राफिकली. इफ इट वाज एट 3 1, सही है. and if I wanted to rotate it 90 degree, तो ये थोड़ा सा इस तरफ जाएगा. What are the coordinates? -1 and 3. Is this clear or not? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? सो -1 and 3 ये सब काम, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी तो असल काम तो हमने किया ही नहीं. व्हाट इज द एक्चुअल टास्क? द एक्चुअल टास्क इज टू फिगर आउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ये तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन. Using these observations, we are trying to understand the transformation matrix. The other method is you write down all the matrix and you try to memorize them, which I do not recommend. सही है? So 3 1 becomes -1 3. Now let's try to do the actual task, which is figuring out the matrix. Can you tell me the first row? सोच समझ के, जल्दी नहीं चाहिए. 0 and let's see. This is just a proposal. हो सकता है गलत हो. चेक करो कैसा आंसर सही आ रहा है आपके पास. When you take and you multiply, 0 multiplies by 3, -1 multiplies by, the final answer is -1. वो सही आ गया. What about the second row? Okay, -1 and 0. Let's see. -1 को मल्टीप्लाई करते हैं. करो. -1 को मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा? What should your answer be? -3 आएगा. Is your image -3? No. 1 and 0. एक दफा करने की ड्रिल है. Do you understand this? I'm not writing all 9 matrices and asking you to memorize it.
Just understand this once. If you want to do it in the exam, it will hardly take 10 to 15 seconds to make your own example and figure out the matrix if you are getting confused. Sir, ये point अच्छा इधर चला जाता था, तो this should be one matrix. So for a 90-degree anti-clockwise rotation about the origin, the matrix must be 0, -1, 1, 0. Is this right? अब आगे कभी भी काम करना हो तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं. The next is, लिखते जाओ वरना बाद में कुछ नहीं समझ आएगा. Yes, class. 180 degree, should we do clockwise first or anti-clockwise first? Okay, let's do 180 degree clockwise first. I'm waiting. 180 degree clockwise first or anti-clockwise first? Very good. Thank you so much. If it's a 180 degree rotation, the direction does not matter. Haven't we done this already? Example दोबारा दिखाऊं घुमाकर. 180 degree में if the hand is at 3, वो example है बार बार. 180 degree clockwise rotate करो, कहाँ चला जाएगा? If the hand is at 3, this is not 3 बेटे. हाँ. If the hand is at 3, I want you to rotate it 180 degree. 180 degree. पहले clockwise करो 9 और फिर एंटी क्लॉकवाइज करो 3 को आराम सुकून से, जल्दी नहीं चाहिए जवाब. दोबारा. If the hand is at 3, rotate it 180 degrees clockwise. 9. Now rotate it 180 degrees anti-clockwise. 9. 3 वाले को कह रहा हूं मैं. So whether you rotate it clockwise or the direction does not matter. कोई बंदा अगर पूरी तरह पलट जाता है तो हम कहते हैं he has changed 180 degrees. 180 degrees clear है, अपनी पोजीशन वापस आना है 360 degrees. 180 degrees is just flipping entirely oppositely. ठीक है ना? Is this clear or not? So let's take the same example again. 3-1 वाला point कहाँ जाएगा? Now I want you people to tell me. If I want you to rotate 3-1 180 degrees. If I want you to rotate 3-1 180 degrees. सोच समझ के. अच्छा पहले let's talk about the clock again. If it was at 3, 180 degree rotate, okay? 180 degree rotate, okay? 9 पे जाता. Is that right? Is that right? If it was at 2, if the hand was at 2, सोच समझ के, जल्दी नहीं चाहिए मुझे जवाब. सोच के जवाब तो कहां जाता? 8 पे. 9 से थोड़ा सा नीचे जाता ना. Now let's talk about the graph. If it was at 3-1, अच्छा अगर 3 पे होता तो कहां चला जाता? 3-0 से पूरा बोला नहीं. -3-0. अगर 3-0 पे होता 180 डिग्री रोटेट होके -3-0. उससे थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया है मैंने 3-1 से. -3 बोलो. अगर 3-1 से शुरू करता तो 180 डिग्री रोटेट होके -3 -1 पे जाता. थिंक अबाउट इट आराम सुकून से. इफ इट वाज एट 0-3, 180 डिग्री रोटेट होके वेयर विल इट गो? -3-0. इस पे अग्री कर रहे हैं? इससे थोड़ा सा ऊपर से शुरू करा हमने 3-1. -3 और थोड़ा सा नीचे जाएगा ना. दोबारा क्लॉक हैंड 3 पे होता है 180 डिग्री रोटेट होके थोड़ा सा ऊपर से शुरू करो. 2 से अगर शुरू करूं तो और नीचे गया ना. इफ आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, वेयर विल आई टू गो? उससे थोड़ा ऊपर से शुरू करूं -3 -1. दोबारा पूछ रहा हूं मैं, कहां जाएगा? लेट मी पिन पॉइंट द इमेज. यहां पर आएगा या नहीं आएगा ये बताओ. If you're starting from 2, where will you go with 180 degree rotation? और नीचे जाओगे ना उससे 9 से. Is this right? So this will be -3 -1. ये सब तो examples हैं, असल काम तो किया ही नहीं. Now can anyone tell me the matrix?
सोच समझ के, जस्ट वन टाइम ड्रिल, सोच समझ के, जल्दी नहीं चाहिए. -1 and okay, let's see, do you get the first thing right? Do you get the first thing right? Okay, कोई बात नहीं. थिंक अबाउट द फर्स्ट रो ऐसी चाहिए कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर -3 आ जाए. थिंक व्हाट टू एलिमेंट्स शुड देयर बी. इस तरह सोचो क्या हो इस पे कि यू मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -3 आ जाए. 3 को बस -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 की जरूरत नहीं. इज दिस राइट? तो इस हिसाब से हम फिगर आउट करते हैं कहां कौन सा एलिमेंट आएगा. ठीक हो गया? So what is the matrix for 180 degree about the origin rotation? Is this right? Is this clear? Okay. ये हो गए 3 matrix. Now if I talk about reflection, क्या चीज जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए? The line of reflection must pass through the origin. So let's say if I reflect on the x-axis, can anyone tell me the equation of the x-axis? Can anyone tell me the equation of the x-axis? Very good. Y is equals to, this is the equation of the x-axis. क्योंकि कभी कभार इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, फिर तुम लोग बोलोगे सर हाउ वुड वी नो. ओके, सेम एग्जांपल 3-1 रिफ्लेक्टेड ऑन द x-axis. वेयर विल इट गो? 3-1 को रिफ्लेक्ट करो x-axis पे. इफ x-axis इज द मिरर लाइन, सोच समझ के, जल्दी नहीं चाहिए जवाब. आई वांट यू टू गिव मी द राइट आंसर इवन इफ इट टेक्स अ मिनट एक्स्ट्रा. पूरी तरह बोलो. 3 - 1 यही अपना इमेज देखेगा या नहीं देखेगा भाई? तो what are the coordinates of this one? 3 and -1. कि नाउ असल काम तो किया ही नहीं अभी तक, ये तो एग्जांपल्स को फिगर आउट किया, तो ऑब्जर्व किया है. फिगर आउट द मैट्रिक्स. फर्स्ट रो में क्या होगा? 1 0. ओके, देन व्हाट अबाउट द सेकंड रो? भाई प्रो हो गए बच्चे तो माशाल्लाह. डन. इजी. अच्छा, if I want to reflect it on the, can anyone tell me the equation of the y-axis? X is equals to 0. This is equation of the y-axis. Yes class. Same example 3-1. पहले तो मुझे इसका इमेज बताओ कहां बनेगा ऐसा reflected on the y-axis. If this is the image, this is the mirror line, sorry. So where will the image be? -3 and, is this right? What are the coordinates of the image? -3 and 1. ये just ये तो example है खाली. Now the main thing. Can anyone figure out the matrix? -1 and 0. On the line y is equals to x. Example, just an example to help us observe and figure out the matrix. Eventual target है matrix को समझ. This is just an example 3-1 जो मैंने ली है because it helps you understand. So 3-1. Can anyone tell me the image for this one? If this is the mirror line, सोच समझ के, जल्दी नहीं, सोच समझ के. I want the right answer. है? If this is a mirror and you're standing here, 0 and -3, क्या image देखोगे? फिर बोलो बोलो बोलो. 1 3. I've told you. How do you understand it? Consider कि आप top view देख रहे हैं. There is a person standing here and he's looking at himself in the mirror. And this is a mirror. उसको image कहाँ नजर आएगा? आप ऊपर से top view देख रहे हैं उसका. कहाँ देखेगा उसको अपना image? बिल्कुल उसके सामने दिखेगा. Is that right? And we have already done this before as well. कि when we reflect on the line y is equals to x, coordinates y और x के क्या हो जाते हैं? Switch जाते हैं. Very good. x y बन जाता है and y x बन जाता है. तो
If I have 3 and 1, bear with me for a while, इसको आराम से कर लेंगे. इसके image क्या बन जाता है? 1 and 3. Now the main thing, can we figure out the matrix? The main thing, can we figure out the matrix? बताओ. 0, 1. One more, just one more. एक और करना है हमें. On the line, y is equals to minus x. If this is the mirror line, yes class, if this is the mirror line, can anyone tell me image कहाँ देखेगा वो अपना? If someone is standing here and trying to look at, हाँ बिल्कुल थोड़ा clarity से बोलो. I have told you दो diagonals हैं, इस तरह से देख लो. These are two diagonals. तो image भी, yes, -1 and -3. So this is 3, 1 का पॉइंट जाके बन जाएगा -1 and -3. ये तो एग्जाम्पल है, असल काम तो किया ही नहीं. 0. अच्छा ओके, आराम से देखो ना. यू कैन एग्री और डिसएग्री विद इट, कोई मसला थोड़ी है. दिस इज जस्ट अ प्रपोजल. इज दिस राइट, रॉन्ग और डू नॉट अंडरस्टैंड? खुद बताओ. व्हाट अबाउट द सेकंड रो? -1 and, is this right? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1. इट इज मैट्रिक्स की जबान का यूनिट होता है, ये 1 होता है. इफ यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 1, क्या वो चेंज होती है? सो इफ यू मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एनी पॉइंट, उसका इमेज चेंज होगा? नहीं होगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इफ यू मल्टीप्लाई एन ऑब्जेक्ट, उसका इमेज चेंज. So this is just to help you understand that all of your matrix, look at all of your matrix, none of them should be an identity matrix. क्योंकि हम तो चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म हो. All the matrices that we have done, we just need to make sure that none of them is an this identity तो नहीं बना दे रहे. Is this clear or not?